session 4 of chapter 12, and that is Heron's formula. Okay, if you remember in the previous session, we learned a new principle, a new theorem, a new statement called Pythagoras statement. या Pythagoras principle. All right. Pythagoras principle, or you can call it theorem, whatever you want. Okay. And based on this, we have already learned square of length of hypotenuse is equal to the sum of squares of the lengths of the remaining two sides. Is that clear? Okay. We are going to use this principle to find measure of third side in a right angled triangle. All right. Let's see. Question. Answer the following. All right. And the first one. In triangle ABC, angle B is a right angle if BC equal to 24 centimeter and AB is equal to 7 centimeter. Find AC. There you are. Very simple question. In triangle, you don't have to write. You don't have to write. You will get screenshots of pictures. Class में कहीं लगवाना. In triangle ABC, angle B is a right angle. So what do you learn from there? It's a right angled triangle. Okay. If BC is 24, that is measure of one of its side, and AB is 7 centimeter, that is measure of another side. Find AC, that is the third remaining side. So what are we supposed to find here? AC. What is AC? One of the side. In fact, it is hypotenuse of a right angled triangle. So whenever there is right angled triangle, we are going to recall, because measures of two sides are given. Measure of third side is what we are supposed to find. And Pythagoras statement, Pythagoras result gives us the relationship between the three sides of a right angled triangle. तो मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ पहले. सॉल्यूशन. ऑलराइट, सिंपल सा फिगर में ड्रॉ करूंगा. दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल. एम आई राइट? यस. चलिए. नाउ विच एंगल इज राइट एंगल? तो पहले मैं वो लिख दूं क्योंकि यहाँ राइट एंगल बताया है. लेट्स कॉल दिस A and this B. Let me write the detail. This should be actually capital, so बड़ा थोड़ा. BC is 24. Here is BC. 24 units centimeter. AB, here it's AB 7, and this is what we are supposed to. We know that. We know that. कौन बताएगा? Yes, you. Pythagoras. बताओ Pythagoras statement result. Yes, you. Hypotenuse square. अरे यहाँ से बोलो अब ट्राइंगल. AC square is equal to AB square plus BC square. That is what we know in right triangle ABC. बोलो AC is hypotenuse. So AC square is equal to AB square plus BC square. Plus remaining two sides are AB and BC. So AB square plus BC square. Those values which are available, all right, we'll put. All right, we'll substitute the values. है ना? Yes, sir. AC ढूंढना है, वो तो नहीं मिलेगा. Is equal to, I continue. AB 7, so AB square will be 7 square. BC 24. तो ब्रैकेट में लिख दो, वो बेहतर है.
BC square, and that is 24. 7 square is 49 plus 24 square is 576 and दोनों का total 625. Therefore, AC square is 620. So square root of AC will be square root of AC square will be square root of 65. 625. Let's obtain the prime factors. किसी को पता है 625? It's a perfect square. किसका? 25. हाँ, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. वरना 5 1 जा 5 5 2 जा 5 5 जा 5 2 जा 5 5 जा 5 5 जा and 5 1 जा. ये रही दो जोड़ी. So that is 5 into 5 and that is 25. Square root is gone. So AC. Therefore AC. Centimeter. So there you are. AC is equal to 25 centimeter. Where will you get the screenshot? This one. So now moving on to the next one. All right. Second. In triangle PQR, hypotenuse QR is equal to 41 centimeter and PR PQ is equal to 9 centimeter. Then find PR. Okay? What's the statement? In triangle PQR, hypotenuse QR. Hypotenuse means this is again a right angle triangle. Okay? QR is the hypotenuse, that is 41 centimeter. PQ is 9 centimeter. Then find. Yes. Once again, in a right angle triangle, measures of two sides are known, given, and you have to find the measure of third side. And for that we can use, but only if it is a, and here we do have right angle triangle. चलिए, so I'll draw. अब कुछ differently draw करता हूँ right angle triangle. मैंने ऐसे draw कर लिया. This is right angle. ये children, hypotenuse QR. ये रहा hypotenuse right angle के सामने वाली side. Let me call this Q and this R. So left point is P. So angle P is right angle. समझ में आया? चलिए, measures. QR is 41 centimeter. PQ is, and this is what we are supposed to. Interesting. We know that. Yes. What we know in this right triangle, where angle P is right angle? Say loudly. PR is equal to. Which is hypotenuse, beta? So QR square, not QR or PR. QR square. QR square is equal to the remaining two sides. PQ or PR. PQ square plus PR square. Now we will substitute the values. Well, QR, that is 41 square, is equal to PQ, that is 9 square, plus PR square, that is what we are supposed to find. PR square. चलिए, अब there are two ways of solving this. आप कौन सी चॉइस करना चाहते हैं आपके ऊपर है. यहां से दो स्टेप अलग अलग कर सकते हैं. First, therefore, I continue. 41 square, so I have to multiply 41 into 41, 0, 4, 16, 1, 4, so 1861, so 1681 is equal to 9 square we know, 81, 9 9 plus PR square. There you are, 1681 minus is equal to PR square. Subtract करोगे तो 16
100. That is equal to PR square. So now you are supposed to find PR. So taking square root, therefore ये actually easy है, but not every time. Square root of 16 और 2 0 का 1 0 लगा दो. So what is square root of 1600? 40. लेकिन मैं यहाँ उसका प्राइम फैक्टर्स दिखा रहा हूँ, क्योंकि हर बार इतना आसान वाला नंबर नहीं मिलने वाला है. That's why. Then what to do? 2 8s are 16, 0, 2 400s are 2, 200s are 200s are 2, 50s are 2, 25s are 5, 5s are and 5 1s are. कितनी जोड़ियां मिल रही है? 2 की. So 2 into another 2, 2 into another pair of 2. So into 2 and 5. सब जोड़ियां मिली, कोई अकेला बच नहीं गया. That is equal to square root gone. I.E. PR is equal to 2 to the 4 to the 8 5 the 40 सेंटीमीटर. मिला के नहीं? या अब मैं आपको दूसरा रास्ता बताने वाला हूं. A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करने वाला हूं. भाई PR को अकेले रखूंगा मैं राइट हैंड साइड पे. PR स्क्वायर को मैं अकेला रखूंगा. लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? 41 स्क्वायर. और ये टर्म ये बाजू आ गया -9 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे चला गया तो माइनस. नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस फैक्टराइजेशन. व्हाट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर? a plus b into a minus b. What is x square minus y square? X plus y into x minus y. So what is 41 square minus 9 square? 41 plus 9 into 41. That is equal to PR square. 41 plus 9 15. और ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट. So ये इनटू, अब नंबर आया तो I'm putting multiplication sign. और ये 38 माइनस करो 38. That is equal to PR square. Okay. अब taking square root on both sides. इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. First you obtain the prime factors of 50. 2 25 are 5 5 are 5. अब वहां लिखोगे 30. This is 132. Yes, the subtraction is 30. So 2 16s are 2, 8s are 2, 4s are 2, 2s are 2 1s are. So जोड़ी निकली 2 की और जोड़ी निकली 2 की. ये रही 2 की जोड़ी और फाइनली 5. That is equal to PR. I.E. PR is equal to 40 सेंटीमीटर. So here is your answer. अब कौन सा वाला बेहतर है, लेफ्ट वाला या राइट वाला? नहीं, राइट वाला ही बेहतर रहेगा. ये नंबर ऐसा आया इसलिए सिंपल सा. जब कोई नंबर देखो यहाँ क्या करना पड़ा, मुझे 41 into 41 मल्टीप्लाई करना पड़ा. तो ओरली नहीं कर पाएंगे. ये स्क्वायर रूट भी आसान नंबर मिला. कोई बार ऐसे नंबर आ जाता 1681. तो कैसे फाइंड आउट करोगे? डिफिकल्ट हो जाएगा. आर यू गेटिंग मी? यहाँ सब ओरली चल रहा है. 41 plus 5 9 50. 41 minus 9 ओरली चल रहा है. फिर ये भी ओरली ही चला, उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी. So it saves your time and energy. અહીંયા અટકવું પડે છે, અહીંયા અટકવું પડતો નથી. Alright, so आज जब ये स्क्रीनशॉट मिलेंगे, from here don't write this, write this. તમને આ આવતો હોય તો કરજો, મને કઈ વાંધો નથી. But sometimes you will be confused, you will have a halt. એવો halt આવશે કે સ્ક્વેર રૂટ શોધતા જ નહીં આવશે. ओके, उसका भी इलाज है, लेकिन यही सिंपल रास्ता है. ओके, so solve by that. Is that clear? Yes, sir. Screenshot are moving away. There you are. Now let's see the third one. In triangle DON, angle DON is equal to 90 degree. If DN is equal to 29 and OD is equal to 20, then find ON.
question. We've already solved 2. Correct? You are given a right angle triangle, and with that you have measures of 2 sides. So you can find the measure of third side using. Yes. I'll draw the figure first. Once again a different figure. ऐसे आपको जो भी फिगर ड्रॉ करना है ड्रॉ कर सकते हैं. दिस इज राइट एंगल 90 डिग्री. दैट इज DON. बीच में क्या है? राइट एंगल. यहाँ D लिखो, यहाँ N लिखो. नाउ द डिटेल्स. DN इज 29. ऊपर है हाइपोटेन्यूस 29. OD ये रहा, दैट इज 20. देन फाइंड ON. We know that. I'll write here. We know that. Yes, you. Pythagoras follow statement for triangle DON. Angle O is right angle. Side opposite to right angle ये है hypotenuse. Say loudly. Yes, follow. हाँ. Yes, that hypotenuse is DN. So DN square is equal to DO square या OD. OD square plus ON square. हाँ, मैं दोनों बार लिखना भूल गया. यहाँ आपको लिखना होगा by Pythagoras. Whenever you are writing the statement of Pythagoras, bracket में लिखना चाहिए by Pythagoras. In earlier 2 I forgot. Please, you all will correct that. As we know, out of 3, 2 are known. Yes, beta. Bolo. Therefore, what is DN? Say loudly. Ella DN. જોઈને બોલવાનું. Say loudly. हम बोले नहीं यहाँ पर. 29 square. OD. Oh, that is also available. 20 square. Plus ON, we don't know. So ON. Now this 29 square minus 20 square is equal to ON square. Therefore, A square minus B square, 2 factors. 29 plus 20 into 29 minus 20 is equal to ON. Therefore, ये addition orally होता है 49 into, so I will put multiplication sign, and this is 9. 29 minus 20, that is equal to ON square. So now we have to find square root. अरे ये मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा और प्राइम फैक्टर भी नहीं निकालना पड़ेगा क्योंकि दोनों परफेक्ट स्क्वायर है. What is square root of 49? 7. Into what is square root of 9? 3. That is equal to ON. Square root गया. I.e. ON is equal to 21 सेंटीमीटर. मीटर कुछ नहीं दिया है तो हम भी कुछ नहीं लिखे. नहीं लिखना चाहिए. यूनिट्स, व्हेन वी डोंट नो वी राइट यूनिट्स. वो यूनिट सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, इंच हो सकता है, किलोमीटर, जो भी होगा. ऑलराइट. या फिगर के हिसाब से तो हम सेंटीमीटर में लिखेंगे. इज दैट क्लियर? सो दैट्स ऑल. Pythagoras statement helps us to find the measure of third side when the measure of 2 sides are known. Alright? Okay? तो मैं अभी Pythagoras statement लिखने वाला हूँ, principle. Okay? And few Pythagorean triplets. देखो 20, 21 और 29 इसको हम बोलते हैं Pythagorean triplet. तो कुछ Pythagorean triplet आपको याद रखना होगा. If you remember, it's nice. 3, 4, 5. It's one Pythagorean triplet. Then 7, 24 and 25, another one. This one, 20, 21 and 29, the third one. Right? 5, 12 and 13, another one. So ऐसे 5 Pythagorean triplet मैं देने वाला हूँ. आपको वो लिखना होगा. Of course, you will get the screenshot, so don't worry. So I'll about this now. Okay? Yeah, Pythagoras principle का statement लिखने वाला हूँ. So I'll keep the title. Please pay attention. In a right angle triangle,
बोलो द स्क्वायर ऑफ Hypotenuse. length of hypotenuse is equal to is equal to the Square sum of squares of length. of the remain of lengths of remaining two sides ठीक है। और छोटा सा फिगर ड्रॉ कर ले हम लोग। ये राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, बोलो ये हाइपोटेनियस है, दिस इज हाइपोटेनियस और रिजल्ट यहाँ AC square is equal to AB square plus BC square. That is the thing. Okay. Next we are going to write Pythagorean triplet. Pythagorean triplets. Okay. कुछ triplets प्राइमरी है और कुछ ट्रिपलेट्स सेकेंडरी है। सेकेंडरी ट्रिपलेट्स हमको प्राइमरी ट्रीटमेंट से मिलते हैं, ओके, ट्रिपलेट से मिलते हैं। विच आर दे? फर्स्ट 3, 4, 5। जो सबसे बड़ा है वो हाइपोटेनियस, द अदर टू साइड्स आर 3 and 4। फ्रॉम हियर यू गेट सेकेंडरी ट्रिपलेट्स। भाई ये तीनों नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 3s are 2 4s are या 4 2s are और 5 2s are, so ये अनदर ट्रिपलेट। अब तीनों नंबर से आप 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 3s are 4 3s are 5 3s are, this is another triplet। इसी से मिला हमें। Like that you can get many triplets। ये हाइपोटेनियस होगा तो these are the length of the remaining two sides। 10 is the length of hypotenuse, these are the length of remaining two sides। 5 is the length of the hypotenuse and these are the, समझ में आ रहा है? ये प्राइमरी है। ये तीनों नंबर का HCF 1 मिलेगा, यहाँ HCF 2 मिल रहा है, यहाँ HCF 3 मिल रहा है। ओके, सो जिसमें HCF मिल रहा है वो सेकेंडरी ट्रिपलेट्स है और ये प्राइमरी बेसिक। दूसरा 5 12 और 30। 5 12 और इसका HCF 1 ही है, लेकिन 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 12 को भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 13 को भी 2 से मल्टीप्लाई करो। सो दिस इज योर अनदर ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब 3 से मल्टीप्लाई करो 5 को, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 29। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट 8 15 और 17। दिस इज प्राइमरी ट्रिपलेट। अब 5 प्राइमरी ट्रिपलेट याद रखियो कभी, हाँ। फ्रॉम देयर यू विल गेट सेकेंडरी। चलो वेद बोलो सेकेंडरी ट्रिपलेट क्या मिलेगा 8 15 17 से? 16 और ये बन जाएगा 30 और ये बन जाएगा 34। 16 30 और 34। दिस इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट, सेकेंडरी वन। 3 से मल्टीप्लाई करो तो 25 45 एंड 51। 24 actually, 24 45 and 51, and this is how you get the triplet. Is that clear? Now fourth one I have to write here. Fourth one, okay, and that is 7 24 and 25. 7 24 and 25. This is primary ने नीचे लग दियो तुम्हें, okay, and secondary बोलो 7 2s are 24 2s are and 25 50। 3s are आप मल्टीप्लाई करो क्योंकि स्क्रीन में नहीं आएगा, या स्क्रीन में नहीं आएगा, आप खुद लिख लीजिए। ऑलराइट, देन नंबर 5 जो लास्ट हमने एग्जांपल किया वो कौन सा?
20, 21 or 29. This is primary triplet, पाइथागोरियन ट्रिपलेट. बोलो ये बन गया 40, ये 42 और ये 58 और आपको आगे मिलेगा. Is that clear? Okay. So this is Pythagoras theorem, the statement, and these are 1, 2, 3, 4, 5 very important Pythagorean triplet to remember. Okay. There are infinite Pythagorean triplet. आपको आगे मिलते ही जाए, Pythagorean triplet मिलते ही जाए. Is that clear, children? Okay. लेकिन ये 5 जरूर याद रखें ट्रिपलेट. Okay. और उसी से हमको बहुत सारे ट्रिपलेट्स मिलेंगे, सेकेंडरी ट्रिपलेट्स. ओके. ऐसा कोई प्राइमरी ट्रिपलेट और सेकेंडरी ट्रिपलेट नहीं है. आई विल कॉल देम लाइक दैट. ओके. प्राइमरी ट्रिपलेट आर दोस 3 numbers whose HCF is 1, and secondary triplets are those 3 numbers whose HCF is not 1, other than 1. कुछ भी, right? Okay. So here I'll take screenshot and send you, right? And then we are going to see the next concept now. How? Once again, answer the following. We are back to finding the area. We are back to finding the area of triangle. Very good. And we have 2 formula. One, the original which you learned earlier. Area of triangle is half into base into. But when you have base and corresponding altitude, you can do that. Correct? And second formula is Heron's. And Heron's formula you will use when? 3 sides are equal. Yes, when all the 3 sides are given to you. Okay? Sure? Understood? भाई समझ पड़ी क्या? Sure? All right. Now, first, in triangle PQR, let me take that. In triangle PQR, angle R is a right angle. Angle R is a right angle. All right. Okay. So PQ will be the hypotenuse, right? That is 17 centimeter, and PR is 15 centimeter. Find area of triangle PQR. Okay. Let's see the question once again. In triangle PQR, angle R is a PQ is equal to 17 and PR is equal to. Find the area of triangle. चलिए मैं पहले फिगर ड्रॉ कर देता हूँ. Solution. We have a right angle triangle, so I am drawing right angle triangle very quickly. Angle R is right angle, so this is right angle. ये P और ये Q. PQ ये 17 सेंटीमीटर. PR ये है 15 सेंटीमीटर. Alright, और QR you don't know. अब हमारे पास 2 फॉर्मूला. राइट एंगल ट्राइंगल की तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू, लेकिन बेस नहीं. तीसरा, आई मीन द नेक्स्ट फॉर्मूला, हेरोन्स फॉर्मूला, मेजर ऑफ ऑल 3 साइड्स इज इक्वल, वो भी नहीं. तो क्या करें भाई? पहले पाइथागोरस यूज करो और क्यूआर ढूंढो, फिर डिसाइड करो. सो वी नो दैट, बोलो PQ स्क्वायर is equal to PR square plus QR square, and don't forget by Pythagoras. All right, chalo. Therefore, PQ 17 square, PR that is 15 square, correct? Or QR plus QR square. So this gives me 17 square minus 15 square, that is equal to QR square. Therefore, bolo 17 plus 15 into 17 minus is equal to QR square. This is 32 into this is simply 2. That is equal to QR square.
चिल्ड्रन वो फैक्टराइज करने से बेहतर 32 2s are 64 32 2s are और क्यों बोला 32 2s are 64 वो आसान है और 64 इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर पता है इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया भाई आम करूं तो વધારે વાર લાગે 32 નો 2 16s are 2 8s are 2 O's are 2 2s are 2 1s are फिर ये 2 2 1s are 1 2 3 है ना करता 32 2s are 64 and 64 is perfect square now taking square root i.e. बोलो QR is equal to square root of 64 is 8 सेंटीमीटर तो ये मैंने नहीं किया क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन बेहतर था मेरे लिए राइट सो नाउ यू गॉट दिस 8 सेंटीमीटर which formula Heron's के પછી half into base into altitude भाई half into base into altitude સારો પડે Heron માં તો સેમી પેરીમીટર શોધો અને પછી સ્ક્વેર રૂટ શોધો હા so finally we are ready for area of triangle ABC is equal to half into base into altitude किसको बेस कहेंगे QR perpendicular क्या है altitude PR so that is half what is base 8 what is PR 15 2 1s are 2 4s are 15 4s are 60 this is I'll put one word area centimeter square now you may write square centimeter that's the area understood so sometimes we'll be in a situation where first we'll have to find the measure of side and then we can go for finding the area all right so that's all we have in this session see you in the next session till then goodbye have a nice day and stay